A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to start up a new chapter of your civics book, and the name of your chapter is Understanding Laws. This is chapter number 4 of your book. In your previous chapter, why do we need a parliament, of your civics book, why do we need a parliament, we have gone through some of the principles, some of the functions of the parliament. And one of the main function of the parliament is to make laws. So we will discuss about laws in this chapter. So now class, as you all know, and you are like maybe familiar with some of the laws. Like what do you mean by the term laws? Laws means rules and regulations. What are laws? Rules and regulations. Okay, so you may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage. Okay, you all are like very much aware about it. What is the age of marriage in India? What is the voting age? This is also a law. Okay, perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. There are some laws dealing with buying and selling of properties. Even you have some laws related to your rights also. Okay, if your rights got violated, what happened? Okay, you have some rights, you have some laws. So now, in this chapter, after reading this chapter, there are some questions जिसके हम answers कर पाएंगे. And what are these questions? Do these laws apply to everyone? क्या ये laws सब पे लागू होते हैं? ठीक है. Could there be laws that are unpopular or controversial? Is there any law which is very much controversial, which is very much unpopular? क्या ऐसे laws हो सकते हैं? So how do new laws come into being? This is the main and the most important question which we are going to answer in this chapter. Okay, so and some other questions are like, what should we as citizens do under such circumstances? As a citizen, as a responsible citizen, what we can do if some laws become unpopular, if some laws become controversial or conflicted laws are there, what we can do? Okay, so these are like some of the questions which we all are going to answer, which we all are get the answer in this chapter. So now just look at this overview portion and what we are going to study in this chapter. These are like, first of all, we will go through the introduction portion, or you can say, do laws apply to all? We will talk about it. We will talk about Sedition Act of 1817. Do correct it. यहाँ पे 1817 होगा. It is my mistake. ठीक है, I mistakenly forgot to write one here. After that, we will talk about the Rowlatt Act. After that, Indian and evolution. After that, how do new laws come about? And under this topic, we will talk about one of the case study, that is domestic violence. And after that, unpopular and controversial laws. So these are some of the topics which we will cover in this chapter and which we will answer in this chapter. So now just look at this paragraph which is mentioned at the beginning of this chapter. Read the following situation and answer these questions that follow. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. So there is a criminal, there is a person who may committed some of the crime, maybe murder, or you can say maybe he theft something or stole something, and for this crime he has been given a 10-year jail sentence by a district court. But he is the son of a government officer, okay, and his father or his mother is trying helping him to hide.
ठीक है, उसके जो मम्मी पापा हैं या फिर पेरेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसे हाइड करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही सीरियस क्राइम किया है और गवर्नमेंट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? क्या तुम्हें लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो एक्शंस हैं वो राइट है? Just tell me the answer in a chat box, yes or no. Is this thing right or wrong? They are doing right thing? This government officer is doing right thing? Yes or no? Yes or no? Tell me. No. He's not doing a right thing. He's, he is helping his son go into hiding because of some crucial or some serious crime he committed, and just because he is the son of government officers, he can do this. Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उसे उसके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है जिसने ये सीरियस क्राइम कमिट किया है, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? क्या just because his father is economically very sound, politically very powerful, very sound, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? These are like some of the questions which we is like going to answer. We know the above is a clear case of the violation of law. कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को हेल्प कर रहे हैं and he committed a very serious crime, and instead of that officer, what he is or she is doing, he is helping his son. No, this is the clear case of the violation of law. लॉ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, वो लॉ को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, so now class, as you all know, constituent assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीजें पढ़ी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्लियरली आर्ग्यू किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं हो सकती है। आर्बिट्रेरी मींस नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान, समटाइम्स सीमिंग अनफेयर। ठीक है, हर एक लॉ, जो भी लॉ बना है उसमें आर्गुमेंट हुआ है, उसमें डिबेट हुआ है उसको बनते हुए, एंड वी नो कि कोई भी अपनी ऑटोनमस पावर, ठीक है, नहीं चला सकता है। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. ठीक है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज इक्वल बिफोर लॉ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं हमारी कंट्री के लिए, एंड इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज एवरीवन। मतलब इन इंडियन कंटेक्स्ट everyone is equal before the law, everyone is equal before the law। अगर हमने जो अभी केस स्टडी पढ़ी, अगर वो होती है, हैपन होती है, इट इज द क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर लॉ एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। No one can be discriminated on the basis of their caste, religion or gender. So our law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, कि किस अगर कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, किस जेंडर से, किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, भेदभाव नहीं करती है। What now one important thing, what does the rule of law means? Rule of law means all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. All laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law.
जितने भी लॉज हैं हमारे, जितने भी लॉज हैं, ऑल लॉज अप्लाई इक्वली, ठीक है, जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं इक्वली उन पे अप्लाई होगा, एंड नोबडी इज सुपीरियर above the law, nobody is no one can be above the law, nobody is superior to the law, ठीक है। so चाहे वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, either it is a wealthy person, either it is the president of the country, prime minister of the country, anybody, if any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established, so it is for everybody, laws are for everybody। कोई ऐसा नहीं होगा कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो वेल्दी पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो इन पे लॉज अप्लाई। नो, इन इंडिया हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। नोबडी इज सुपीरियर टू द लॉ, एवरीबडी इज इक्वल टू द लॉ। सो रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। जितने भी लॉज हैं वो सब सिटीजन्स के सामने क्या है, इक्वली अप्लाई होते हैं। कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उन पे इक्वली अप्लाइड होते हैं, कोई भी उससे सुपीरियर नहीं है। गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही क्यों हो, चाहे वो वेल्दी पर्सन या कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ही क्यों ना हो, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। सो बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये हमेशा ऐसा होता है? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? In ancient India, there were innumerable and often overlapping local communities. There were different communities. ठीक है, so हमारे ancient India में there were countless, innumerable means countless communities were there and often overlapping local laws were there. ठीक है, बहुत सारे overlapping local laws भी थे. So different communities have enjoyed different degrees of autonomy, different communities different autonomy को, different power को enjoy करती थी। हम ancient India की बात करते हैं। So to administering these laws among their own, तो अब क्या हो रहा था, डिफरेंट डिग्रीज, अब डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट पावर को क्या कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, एंड डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इन लॉज को क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, अपने आप ही मैनेज कर रहे थे। सो दिस रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, दिस रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल ऑफ लॉ। in chapter number 2 of your history we talked about that civil code, criminal code, हमने फौजदारी अदालत इनके बारे में पढ़ा था ना। तो ये ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने ही क्या किया था, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट और यू कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। रूल ऑफ लॉ मींस एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, nobody is superior to the law. Okay, so who introduced the rule of law in India? Britishers or British colonialists introduced the rule of law in India. Historians disputed this claim on several grounds. About the rule of law, historians disputed this claim. First one is colonial law was arbitrary. कुछ लोग बोलते हैं जो colonial rule है वो क्या है, रूल जो है वो colonial law काफी arbitrary है। arbitrary का मतलब क्या होता है, मनमाना, मनमानी, ठीक है, कोई रीजंस पे बेस्ड नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, ठीक है, अनफेयर होता है। So are we not seeming to be based on any reason or plan and sometimes seeming unfair? This is arbitrary. So some historians said colonial law was arbitrary. For example, British law is the British law in the Sedition Act of 1870. And what is this? What is the Sedition Act of 1870? Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial or without any court hearing. अब according to this British law 1870 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला था, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसका कोर्ट हियरिंग भी नहीं लिया जाएगा, उसको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने क्यों किया, क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों किया।
तो ये क्या है, that's why some historians said this colonial law was arbitrary. So Indian nationalists played a prominent role in the developing of the legal sphere. They began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law demanded respect in colonial courts, play a greater role in making decisions. फिर धीरे धीरे क्या किया, जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं, नेशनल लीडर्स हैं, they played a very significant role, very prominent, very vital role in the development of the legal sphere. They started fighting for the equality. They started fighting for the idea of law. They wanted to change the idea of law, and they started whatever the laws they were forced to obey. उनको बोला कि हम ये इन सबको चेंज करने की जरूरत है, देयर शुड बी इक्वालिटी विद एवरीबॉडी. सो उन्होंने कहा कि हमें भी क्या है, कॉलोनियल कोर्ट्स में उतनी ही रेस्पेक्ट चाहिए जितनी ब्रिटिशर को मिलती है. हमें भी क्या है, जो लॉज हैं वो इक्वल होने चाहिए सबके लिए. सो दे प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस. ओके, सो class, this is all about today. Thank you for joining the class. In our next class, we will talk about the the Rowlatt Act incident. Okay, this is an example of arbitrariness. We will talk about it. Thank you so much for joining the class, everybody. Bye. Take care.